Bismillahirrahmanirrahim. I am Abdul Ghani. I am a biology coach. Today our topic is cellular organization. According to cellular organization, all organisms are divided into three main groups. Number 1, unicellular organisms. Number 2, colonial type. Number 3, multicellular organisms. Number 1, unicellular organism. Uni mean one. All organisms that are made up of only one cell are known as unicellular organism. ऐसे तमाम जानदार जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. इनके एग्जाम्पल है अमेबा, पैरामीशियम. Number 2 is colonial type. In a colony, many unicellular organisms live together, but they do not have division of labor. The cells are independent to each other. Examples are blue-green algae and volvox. Number 3, multicellular organisms. In multicellular organisms, cells are organized together to form tissues, organs, organ systems. The examples are mustard plant and frog. स्टूडेंट्स, अगर इम्तहानी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इस टॉपिक में 3 शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है. पहला, डिफाइन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. व्हाट इज कॉलोनियल टाइप. डिफाइन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन सकता है व्हाट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन.